चलो तो लास्ट क्लास का समझ आ गया था उज्जवल? एनी डाउट्स? No, sir, no doubt. Okay. So Rajan, what we have done in the last class, we have spoken regarding this research methodology. Okay, so introduction to research methodology. How is it? Why it is important in public health? Why we need to understand it? Okay, so you can get in details with the rest of the other students. No issues. Okay. Okay, doctor. Okay. Now, see, as I've already told you, that research is basically, it is a search for knowledge. Like I've told you in the earlier classes, why do we do research? है ना? हम research क्यों करते हैं? Yes, Ujjwal, why do we do research? Why do we need to understand this subject, research methodology in public health? Yes. सर एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं सुन रहा Okay. हूँ। Okay. No issues. Okay. Okay. No issues. Yes, Rajan. Why do we need to do research? Why suppose you are working in a hospital? Yes. Yeah, because mainly as we are studying the public health, we need to identify some solution for the problem that is happening in the community. And Okay. we can, after doing this research by doing the different methodologies, different type of research, we will get some quantitative scientific data which can be useful for all the community population. Okay. I think so. Okay. So see, when we are saying public health, so public health is basically maintaining the health of a public at a population level. Now it is just not only just to find solutions, but in order to understand like what is the relationship between variables. For example, if I am saying like which factors may be responsible for causing COVID, which factors may be responsible for causing infant mortality rate, increasing the infant mortality rate in a population. So depending on the developing countries and the developed countries, the health problems or the medical problems would be different. So based on the understanding of the medical problems, you need to underline, you need to define that these problems are basically depending on the management issues or depending on to the integral biological issues or depending, or it should be a culmination of the both the things, or it is basically a problem of the resources. Because at the end of the day, I told you, like public health means about how to manage the health of the people at a population level. Now it will include number of things. It will include the issues of management, leadership, accountability. I told you what is a health system earlier in earlier classes. So there we have seen like finances, like health, financer for health, human resource for health, all the other resources for health, IT for health, medicine, and the other infrastructure requirements for health. So these are an integral part of a health system. So when you do any research, when you try to find out the truth, when you want to understand the overall relationship between different variables, so what we are doing over here, we are doing a systematic. So it's a systematic because there is a certain objective. You are saying whether the effect of variable A is on variable B, whether there is an effect. For example, if I say the age of the child and the age of the mother and the weight of the child, so some people would say no, there is no relation. Some people would say no, there is a relation. So either there could be two assumptions. There could be a relationship, there could not be a relationship. So if there's a relationship, then what type of a relationship? Where if the age is increasing, whether the weight is also increasing. If the age is increasing or the weight is decreasing, or the weight has got no correlation. So depending on the various factors, depending upon the background, we try to understand the importance of these subjects in the light of public health. Is it clear? Rajan, is it clear? Yes, doctor, it's clear. Okay, so research is basically what? So if you want to find out of research,
if you want to find out the basic objectives of research in public health, so number one, it has to be systematic, because without being systematic, you cannot reach your goal. Suppose you have to reach Calcutta, so you won't buy a ticket for Bombay, right? So you should know, like, I have to reach over there. And it is scientific because it is based on pure science. So it has to be taken into account, what is the target audience, what is the sample size, from where you have collected, whether it is homogeneous or heterogeneous. So whether the people that you have chosen into your research actually represents the problem. It should be a true copy of the problem. Then only you can bring an assumption. And then what type of an intervention you are given, whether that intervention will be good or bad. So depending on, there can be different factors. So it has got a scientific mindset. So research is systematic, it is scientific, and it has to be a careful inquiry or examination. Because what is the purpose of research? Because we do research in order to, so there are three basic purposes of research. Number one, it challenges the status quo. What do you mean by it challenges the status quo? Status quo means, like, uh, what we are doing. Status quo means like, we are basically, whatever being written on the books, we simply accept those without actually questioning those. So it is like challenging the status quo. So second is to generate a new embodiment of knowledge, so that we are able to create new knowledge. When new knowledge is created, so there could be better ways of doing the same things in a better manner with less complication. And then it helps you to understand the problems in different dimensions, so that you can understand new perspective and develop better and advanced solutions for the same. So these are the basic issues which are, the basic factors which is responsible for research. So research, as you can see in the slide, it is a systematic, it is scientific, it is careful inquiry or examination to discover any new information about something. For example, whether the COVID vaccine is working equally good in children. If it in children, it has to be given at what age it has to be given. Okay, how it has to be given, where it has to be given, at what duration it has to. So see, if you are basically able to answer where, what, how, when, why, so you will be getting your answers in a better manner. So research is systematic, it is controlled, it is critical and empirical investigation of a hypothesis. So hypothesis is very important. Hypothesis means assumption. For example, if I say I want to check the knowledge and attitude of the medical professionals regarding COVID infection. So I want to check whether every medical professional whom I am seeing, whether somebody is a doctor or nurse or a paramedic, they have equally good knowledge and practice regarding COVID. Okay, maybe or may not be. And then I would say whether there's a difference with experience, there's a difference with the place, like the people or the medical staff in Delhi, in NCR, they are more better equipped in order to handle the patients who are from smaller cities. So maybe or may not be. So see, if I'm trying to evaluate one variable with the other, and these variables are basically, are basically reflecting upon the true nature of the subjects. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Babicha. Is it clear to you, Babicha? Yes, sir. So what is the objective or the purpose of research? I have told you also in the last class, to extend your knowledge. So it will work as an embodiment of knowledge, to put light or to see the old problems in a new light, for the generalization. So what we are trying to do, we are trying to convert information. So basically, what the purpose of research is, you have to collect data. Now that data is basically raw data, that the numbers has to be put into some information. The information has to be put into knowledge, and that knowledge has to be put into wisdom. So this is the basic purpose of studying
your research methodology and biostatistics. Okay, so research methodology and biostatistics will always go hand in hand. If you don't know about what is the data, how many types of data are there, what is the impact of data, how the data can be manipulated, so the collection of data for any purpose won't be suffice, and it won't be able to do justice with the type of study that you want to do. So data will help to verify and test the existing fact and the theories. And then last but not the least, the research paper or the research methodology will help in finding the solutions to the problems. Okay. Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? What are the objectives or the purpose of the research? Yes. Is this point clear to everyone? Babicha, Regin, Ujwal. Yes, sir. Yes, sir. Yes, doctor. Okay. It's clear. So now let us understand what is the difference, what are the different types of research. So as I told you also in the earlier class, there are two types of research. One is a descriptive research and another is an analytical research. So the classification number one is it can be described in terms of descriptive research and analytical research. Descriptive research, the other name of descriptive research can be a qualitative research, where we are explaining or describing a particular information or a data. For example, like if suppose when COVID came into place, the first doctor who explained COVID, she wrote a research paper example that this disease will happen in the evening, and by the morning the person will be totally on support. Okay, so why this disease spreads so rapidly? Then the obvious question would be, where, in which patients does it spread, whether it spreads in all the patient, or any correlation is seen, like this disease spreads in those patients who have got a chronic infection or a chronic diseases. So we really need to, so descriptive data basically is the, because when you describe any data, or when you describe any research, so suppose like if we are doing any study on describing a particular population, where do they live, why do they live over there, what are the benefits of living over there. So you are trying to describe, or you describe any problem or any disease. Okay, so this type of a research. So you can see over here, a descriptive research is a fact finding investigation. So here you want to find the facts. For example, if something is being changed, so we should know as a whole, like what thing is being changed. So it is a fact finding investigation in which is being aided in describing the characteristics. So we are basically describing the characteristic of a person, like this person did this. So this person will look like this, he will present like this, he will behave like this. So you are basically describing. So describing the characteristics of an individual or a situation or a group, describing the state of affairs at which it exists in present. And here what the researcher has got no control over the variables. So variables can depend between variables can be dependent. So you see, what is variable? Variable is basically a quality. Now, for example, if I would say you describe a cricket bat, so I would say this cricket bat is this much long, this cricket bat is this much thick, this cricket bat has got a very sweet spot in the bat. Okay, and the cricket bat is being used by Rahul Dravid. So we will describe it in different manner. But so variables are basically the various qualities or the various aspects. Okay, now suppose if I am describing pain, then pain is a variable. If I am describing range of motion, then the range of motion is a variable. If we are describing the functional index, okay, so it will be a functional index. So a student of a management course who is pursue a research on customer preference over, so what do people prefer, which type of a service, an online service. Suppose if you take a research like whether the student prefer a face-to-face class or an online class, and if that an online class, like what problems do they face. So based on this, this could be a descriptive research that can be done in the particular subject. Is it clear? Yes, sir. Is Yes, sir. descriptive research clear to everyone? Okay. Okay.
So, and the second one is analytical research. Analytical research is different from descriptive because in analytical result, we need to have a hypothesis. Suppose if I'm saying, yes, I believe that there is a difference between the rich people and the old people. So suppose if I want to describe there's a relationship between a rich people and the poor people. So what is describing rich? Whom I am saying rich? Why I am saying rich? Okay. So we need to describe because we need to take a hypothesis. For example, if I said the age of the mother can affect the weight of the child. So this is a hypothesis. So the other hypothesis, no, the age of the mother does not affect the weight of the child. So either it may affect, it may not affect. If it does not affect, then it is a null hypothesis. If it affects, that means it is an alternate hypothesis. So we really need to understand the relationship between different factors so that we can analyze the facts between them, and based on this, we can basically use this thing in analytical analysis. Analytical basically has come from the word analysis. That means we are trying to summarize the thing. We need to see the thing and whether we are able to do it effectively. Is it clear? Yes, Is sir. it okay? Then the other way of describing, so we have already done fundamental research. The other way of describing research is basically applied and fundamental research. Again, fundamental research is the fundamental things. Okay, like example, we know about gravity, we know about the various computer means various terminologies. So, and applied research is basically using that research into the practical aspects of any organization. Okay, so because so practical research or applied research are impact directly on wealth, health, and culture, or development of a method of that organization. So there are different types of applied research. So applied research is carried out to find out solutions to a real life problem requiring an action or a policy decision. So depending on whether we take an action or a policy decision based on this, we have to do an applied research. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, doctor. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So fundamental research is also known as the basic or the pure research. That means for the sake of knowledge, you know everything like what is osmosis, what is pressure, how the pressure is regulated. You should know about the cardiac output. So if you know about the basic physiology and anatomy, so that means you have a basic understanding of the fundamental research. Similarly, from this fundamental capacity, we try to take out the important part, which is the intellectual curiosity. And from there, we try to understand, what is the impact of these factors over the phenomenon. So this is also a difference between the applied research and the fundamental research. Then the third way of describing research is your qualitative and quantitative research. See, qualitative and quantitative, again, I told you, qualitative is also known as phenomenological research. That means like a phenomena. It is regarding a quality. Whereas quantitative research is also known as positivistic research. Okay, because you are trying to get wholesome numbers, and based on those numbers, you are trying to evaluate your performance. So quantitative research, for example, in a medical research, if you take a blood sugar, or you take, suppose I want to see the effect of exercises on blood sugar among diabetes patient. So I will make the person do three different of exercises, and based on this, I will take their blood pressure, I will take their RBC, I will take their platelets, I might take any of the factors, and still I'm trying to evaluate, because in quantitative research, I can know, how many substance, the quantity of the substance we are given in order to produce a desired effect or the result. So quantitative research is basically employed for measuring the quantity of a particular phenomena by the use of the statistical analysis, whereas the qualitative research is a non-quantitative type of research, because it talks about quality. For example, like satisfaction, for example, like motivation, for example, like if I say, okay, why do people don't do exercise?
Like, so it can be, some people will say they are lazy, then how many percentage of people are lazy, why they are lazy, why they don't want to do any exercise. So we try to understand the basic problem and able to suggest solutions for the same. So this is the difference between the qualitative and the quantitative research. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, any doubts? Any doubts with anyone? No, sir. No, sir. Hold सर Yes. सर कुछ कुछ एग्जाम्पल थोड़ा हिंदी में बताएगा तो अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव रिसर्च. अब क्वालिटेटिव रिसर्च में मैंने कहा ओके, आपने सपोज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, सपोज यू हैव टेकन अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ यू आर पेइंग अ प्रीमियम, आप प्रीमियम भर रहे हैं. सपोज आपने प्रीमियम भरा 25,000 रुपए पर ईयर, आप 3 साल से प्रीमियम भर रहे हैं, तो आपका टोटल जेब से 75,000 चला गया. अब आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है, यू आर वेरी हैप्पी दैट ओके फाइन, ठीक है, मतलब मैंने तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है ताकि मैं अगर कल को बीमार भी पड़ गया तो मुझे इससे कवरेज मिल जाएगा. अब आप बीमार पड़ गए सडनली और आप फिर बैंक हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में आपने कहा कि यार मेरा हेल्थ इंश्योरेंस मैं यूज करता हूँ. आपने कार्ड निकाला, उस सामने वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी नहीं चलेगा क्योंकि आपका इसमें ये कम है और आपका ये फैक्टर अभी वैलिड नहीं है. तो आपने कहा नहीं भाई, पर मैंने तो पैसे दिए हुए हैं. अब अगर पैसे दिए स्टिल अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिले तो इस पे हमको फिर रिसर्च स्टडी करना पड़ेगा कि हाउ मच सेटिस्फाइड यू आर विथ योर सर्विसेज. अब नाउ सपोज आपने कहा यार मैंने तो पैसे दिए हुए थे 75,000 रुपए, उसके बावजूद भी मेरे को डिस्काउंट नहीं मिला, तो इसका मतलब देन यू फील चीटेड. आप तो इससे मैं स्टडी निकाल सकता हूँ रिगार्डिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल of the patient with their health insurance policy. तो अब मान लीजिए क्वालिटेटिव वेरिएबल है, तो आप मैं आपसे एग्जैक्टली सर परसेंटेज ऑफ सेटिस्फेक्शन, percentage of satisfaction, whether you are highly satisfied, moderately satisfied, least satisfied. फिर हमको वो फैक्टर, तो हम उस पे न्यूमरस क्वेश्चन डाल सकते हैं. अच्छा, आपने कितने की पॉलिसी ली, कब ली, कितने महीने आपको प्रीमियम देते हुए हो गया, आप प्रीमियम कितने साल से दे रहे हैं, ठीक है, आपने आज की डेट में कितनी पॉलिसी ली, उसके लिए आप कितना पैसा दे रहे हैं, वो क्या आपको टाइम पे आप उसको यूज कर पाते हैं, क्या उससे आपका पैसा सेव हो सकता है. और तो अगर इन सब चीजों का अगर आंसर अगर हमको मिल जाए और ऐसा हम 100 लोगों के ऊपर करें तो वी कैन डू अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू नो द थिंग्स वेदर दे आर बेसिकली प्रूविंग बेनिफिशियल और दे आर बेसिकली अ लायबिलिटी. यस यस, ओके सर, ओके सर. ओके, तो ये कॉन्सेप्चुअल. सो इसके अलावा जो अलग टाइप का कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल. एम्पिरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे मैंने अभी इंश्योरेंस का बोला, इट्स अ कॉन्सेप्ट. तो इट इज बेसिकली यूज्ड बाय फिलोसोफर्स थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा कि कोविड के टाइम पे किस तरीके के आपको फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, सो दैट मींस इट्स अ फंडामेंटल रिसर्च. उसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. एम्पेरिकल रिसर्च इज अ डेटा बेस्ड रिसर्च. अगर जब भी आपके पास में कोई भी ऐसी रिसर्च हो विच इज बैक्ड बाय डेटा, जो आपने कलेक्ट किया हुआ है या जो आपने कलेक्ट किया हुआ है थ्रू सेकेंडरी डेटा, ठीक है ना, या आपने प्राइमरी डेटा लिया हुआ, आपने डायरेक्टली क्वेश्चनर भरवाया, उस क्वेश्चनर को आपने इवैल्यूएट किया और उसके इवैल्यूएशन के बेसिस पे आपको अपने नतीजे सामने आए. तो एम्पेरिकल रिसर्च इज डेटा बेस्ड रिसर्च विच डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस और द ऑब्जर्वेशन अलोन. या तो हम अपने तुक्के से लिखते हैं या हम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हैं और हम उसके थ्रू जब हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम उसको कंक्लूड करते हैं और उससे कुछ ना कुछ हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं. ओके, so this is the difference between a conceptual and empirical research. Is it clear to everyone? Yes sir, yes sir. Okay, then the other types of research is one time research. जब आप एक सिंगल टाइम पीरियड तक 3 साल तक एक ही टाइप का रिसर्च कर रहे हैं. और उसी तरीके से आपको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ये है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आप बेसिकली कैरिड ओवर अ सेवरल पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि आप बेसिकली आपने एक बच्चे लिए, उनको आपने बेसिकली आपने उन बच्चों को के बोन्स को इवैल्यूएट कर लिया. उसके बाद में आपने उन बच्चों को आपने वो दिया, आपने बोन्स को इवैल्यूएट कर लिया और उसके बाद में फिर आपने उन बच्चों को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज दी और आपने उनको अच्छा न्यूट्रिशन दिया और उसके बाद में फिर आपने अगले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल, 1.5 साल तक आप ऑब्जर्व करते रहे. तो इस तरीके का रिसर्च जो है
वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, ताकि आप देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब किस तरीके के चेंजेस आते हैं विद न्यूमरस फैक्टर्स। ओके, और उन फैक्टर्स को आप फिर इवेलुएट करते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, वेदर दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट और दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली देन अदर कोरिलेशन रिसर्च है, जब आप दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देन आपके लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बेसिकली साइकोलॉजी या बेसिकली डेवलपमेंट बेस्ड रिसर्च होते हैं। ठीक है ना, मेडिसिन में ज्यादातर हम अलग अलग डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए इसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वगैरह को क्या करते हैं। इज इट क्लियर? Sir, actually, mainly descriptive, analytic, and qualitative, quantitative, conceptual, and empirical. ये यस basic. यस, अगर अगर इतना भी अगर आपको आता है तो यस बेसिकली। देन डायग्नोस्टिक रिसर्च भी होता है। डायग्नोस्टिक रिसर्च लाइक डायग्नोसिस करने के लिए, उसको चीजों को समझने के लिए कि अभी लेटेस्ट क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से आपने ये फैक्टर्स लिए, कौन कौन से फैक्टर्स के वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके अल्टीमेटली आप सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो इस तरीके का मतलब डायग्नोस्टिक रिसर्च भी होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देन आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली आप डिजाइन करते हैं इस तरीके से ताकि आपके एक पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल वो प्रॉपर्टी है जो कि आप मतलब आप बेसिकली उसकी क्वालिटी को एसेस कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल और ना फिनोमेना, तो उस वेरिएबल का उस फिनोमेना, जैसे मैंने कहा एज ऑफ द मदर, तो एज ऑफ द मदर का वेट ऑफ द चाइल्ड पे, तब पुराने टाइम पे जब अर्ली मैरिजेस हो जाती थी तो हम बोलते थे क्योंकि एज कम है इसलिए मतलब एज ऑफ द मदर एंड वेट ऑफ द चाइल्ड। तो पुराने जमाने में जैसे मदर की एज कम उम्र में हो जाती, शादी हो जाती थी, तो उनके बच्चे भी होते थे, तो क्योंकि उनका अपना शरीर डेवलप नहीं था तो नेचुरली इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा था। तो अगर मान लीजिए अगर हम इसको स्टडी करते कि हाउ डू द एज ऑफ द मदर कैन इम्पैक्ट द वेट ऑफ द चाइल्ड, तो हम लेते कि अगर हम 10, 15, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ मदर्स की एज लेते, वेट उन बच्चों का लेते, और फिर हम रेट्रोग्रेड देखने की कोशिश करते हैं कि वेट उन बच्चों का ज्यादा है कम है, और अगर ज्यादा है तो किस लिए ज्यादा है, और अगर कम है तो क्यों कम है, और वेदर उनमें से जो फैक्टर्स हम डिफाइन कर रहे हैं वेदर दे आर इंटर रिलेटेड, वो फैक्टर्स की वजह से कोई इंटर रिलेशन है या नहीं है, उन फैक्टर्स की वजह से कुछ और चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और अगर उन फैक्टर्स का कोई असर ही नहीं है देन दैट विल बी नोन एज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। So one is a dependent variable, one is a independent variable, and the third one is a dependent variable, independent variable, and the third one is an extraneous variable. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. फिर हिस्टोरिकल रिसर्च है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा भी इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये चीज कब हुई थी, क्या उसके पीछे का लॉजिक था, क्यों इस चीज को बनाया गया। उससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी, बिकॉज हिस्ट्री टीचर्स यू दिस, कौन सी करने से कोई राजा बहुत महान बन गया था, कौन सी चीजें मतलब। तो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, मान लीजिए कि आप हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आप फैक्टर्स ले लीजिए, कुछ डिजीज का ट्रेंड ले लीजिए, सपोज द डेवलपमेंट ऑफ अ वैक्सीन। नाउ वैक्सीन, उस टाइम पे वैक्सीन जो डेवलप हुई, आज के टाइम पे कैसे 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन बन गई, 6 महीने के अंदर। जो पहले वैक्सीन बनाने में 1 साल लगता है, मतलब 10-10 साल लग जाते थे आज की डेट में। सो देन सो इट विल टेल यू अबाउट द वेरियस डिस्कवरीज, किस तरीके से क्या, एंड इट विल ऑल्सो टेल यू like how do it impacts, like for example आज के टाइम में मान लीजिए कि आज के टाइम पे अगर हम कोई भी चीज करना चाहते हैं, मीन्स मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे डायनासोर्स है। अब डायनासोर अगर वहां के फॉसिल्स मिले हैं, तो वो फॉसिल्स किस तरीके से मिले हैं, वो क्या रहे होंगे, कितने साल पहले रहे होंगे, अच्छा उसके पीछे की थ्योरीज क्या हैं, उस टाइम वो उड़ सकते थे या पैदल चलते थे। तो यू सी यू कैन गेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम, है ना, बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रूफ दैट यू कलेक्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देन Sir, एक्सप्लोरेटरी, sir, यस। one question. Actually, आपने क्लासिफिकेशन ने बोला, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है,
यही सब MPH में भी इम्पोर्टेंट है ना? एमपीएच में इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि एमपीएच में, देखिए एमपीएच में पर्टिकुलरली आपके क्रॉस सेक्शनल स्टडीज बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस के बारे में बताएंगी। आप इंटरवेंशनल स्टडीज हैं, जो मान लीजिए कि आप सपोज कल को हमने कहा कि आपने एक कम्युनिटी को कैश दे दिया और दूसरी कम्युनिटी को आपने काइंड या कोई वाउचर सिस्टम दे दिया, उन दोनों का से उनके बिहेवियर पे क्या असर पड़ रहा है, दोनों ज्यादा मोटिवेटेड किस तरीके से होते हैं। जैसे आपने कहा आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपने एक स्कीम चलाई जिसमें आपने कहा कि हम आपको साल का 2,000 रुपए का फ्री कूपन देंगे जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरे ने कहा नहीं, हम आपको 2,000 रुपए का कैश वाउचर दे देंगे। अब दोनों में से काम किसके अंदर मतलब निकल के आ रहा है, क्यों निकल के आ रहा है या क्यों नहीं निकल के आ रहा है, तो मतलब वही सब चीजें। अब मान लीजिए कि अगर हम आज बोलते हैं कि इंडिया में कोविड, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोविड में तो 4 लाख मौतें हुई हैं, डब्ल्यूएचओ ने कहा नहीं भैया 4 लाख नहीं, 48 लाख मौतें हुई हैं, 12 टाइम्स ज्यादा डेथ हुई हैं। और डब्ल्यूएचओ को एमआईटी ने बोल भी दिया था कि आप इंडिया के स्टैट्स को नहीं बिलीव करना, क्योंकि स्टैट्स जो हैं वो सब झूठे स्टैट्स हैं, वो रिलायबल नहीं है। तो उनको कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने अलग अलग मॉडल्स लिए, उन्होंने टेलीफोन के थ्रू लोगों को घर में कॉल करवाया, पता करवाया, इंफॉर्मेशन ली, और उससे उन्होंने एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाया कि अगर नॉर्मल टाइम में अगर इतने लोगों की डेथ हुई है तो कोरोना के टाइम पे कितने लोगों की डेथ, जिससे उन्होंने प्रेडिक्ट किया, एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की, करीब 48 लाख लोगों की डेथ हुई है ड्यूरिंग दी कोरोना टाइम्स। सो ये बेसिकली क्या आपने एक्सप्लोर किया क्रॉस सेक्शनल स्टडी, है? ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है सर? नहीं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में तो आप नॉलेज, एटीट्यूड, आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों को कितनी नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है, बट अगर मैं यस मान सर। लीजिए कि मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो मतलब कि ये किस तरीके का है, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी होएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू डू अ डिडक्टिव रिसर्च। मैं वहां से डिडक्ट करने की कोशिश, वहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ उस इंफॉर्मेशन से, है ना, जहाँ पे मैं सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करूंगा, मैं देखूंगा। तो एक तो हो गया प्राइमरी डेटा, एक हो गया प्राइमरी डेटा, वो है जो आप किसी को क्वेश्चनर देके जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। सेकेंडरी डेटा वो है जैसे सेंसस वगैरह हो गया, ऑलरेडी था, वहां से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चीजों को नए सिरे से एनालाइज करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ओके। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। आप कोई अफसर है कंक्लूसिव रिसर्च, ये एक तरीके कंक्लूसिव रिसर्च बेसिकली टेस्ट हाइपोथेसिस को अगेन टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, कि दो फैक्टर्स में से ये बेसिकली ये फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, या कुछ और चीज रिस्पॉन्सिबल है। सो वी आर देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट लाइक कैजुअल रिसर्च। अगेन कैजुअल रिसर्च में दो वेरिएबल्स के बीच में एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर देखा जाता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल के में, इफ अ क्लोथिंग कंपनी सेल्स ब्लू डेनिम जीन्स कैन इम्पैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी चेंजिंग द प्रोडक्ट डिजाइन। अब अगर मान लीजिए कि अगर कंपनी में ब्लू कलर का जीन्स ज्यादा बिकता है, अगर आपने मतलब डिजाइन को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया सेम चीज, तो वो ज्यादा बिकेगी या नहीं बिकेगी? अगर बिकेगी तो फिर क्यों बिकेगी, बिकेगी नहीं तो क्यों नहीं बिकेगी? तो इस टाइप से देयर कुड बी सर्टेन कैजुअल रिसर्च एज वेल। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जिसको हम थोड़ा सा ये समझ लेंगे, और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम डेटा पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, नॉमिनल डेटा क्या है, ऑर्डिनल डेटा क्या है, इंटरवल डेटा है, रेशियो डेटा क्या है, डेटा की क्यों इंपॉर्टेंस है, उन डेटा से हम क्या करते हैं, डेटा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मेजर्स ऑफ means measures of central tendency and measures of dispersion में क्या difference है. So this we are going to do in the next class. Is it clear? यस सर, यस सर। Yes, doctor. Okay. So we'll take a leave. So in the next class, next week, we'll be covering the different types of data. Okay. ओके Chalo. सर। Okay. Take care. Okay, doctor, Thank you, when sir. will be the, any idea regarding the first year supplementary examination? Still It not is still at, going to they will bring into the website, because still just the result came 2 or 3 days back.
So we are Uh-huh. expecting maybe this month they are going to give some announcement. Okay, I'll let you know. Okay, doctor. Because April, traveling. So, Okay, 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 thank you, sir. okay, okay. Take care. Good night. bye. Good night.